नमस्कार। एक बार पुनः हम इग्नू के इस ओपन सेशन में आपके सामने हाजिर हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि आपने भी अपने अपने टीवी चैनल्स खोल लिए होंगे, अब टीवी सेट्स खोल लिए होंगे और आप भी इस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ये सब हम सभी जानते हैं और एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। और मेरे साथ में जो आज एक रिसोर्स पर्सन है उनका भी मैं आपको परिचय कराती हूँ। वो डॉक्टर मोनी सहाय, जो कि इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 1 से हैं और वो आज आपके सामने आपके सवालों के जवाब देंगे और साथ ही आपकी जो भी समस्याएं रहती हैं, हम चाहते हैं कि आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे जुड़ें, अपनी समस्याएं पूछें, अपने प्रश्न पूछें, जिससे कि हम आपके समस्याओं का, आपके सवालों का उत्तर अच्छी तरह से उचित रूप से दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जिज्ञासाएं हैं इग्नू के संबंधित वो हम उसका समाधान कर सकें। तो एक बार पुनः मैं अपनी रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मोनी सहाय, सहायक क्षेत्रीय निदेशक दिल्ली 1 से हैं, उनका मैं स्वागत करती हूं। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन उनकी तरफ रूबरू होने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपकी जो भी जानना चाहते हैं, जो भी आपके सवाल हैं, अगर आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं तो बहुत ही हमको भी बहुत अच्छा लगेगा और हम आपके सवालों के, आपकी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जवाब मिल सके। तो जो नंबर नीचे आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन नंबरों के माध्यम से फ़ोन कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा कि ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए ही है, स्पेशली जो इग्नू के विद्यार्थी हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, या फिर जो जुड़ना चाहते हैं इग्नू से, अपनी हायर स्टडीज़ से संबंधित कुछ भी जानकारी आप चाहते हैं, वो सारे हम कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम में आपके उन सभी सवालों के, उन सभी बातों के, उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सके। और इसीलिए यह साप्ताहिक कार्यक्रम आपके सामने प्रत्येक मंगलवार को 3 से 4 बजे ज्ञान दर्शन पर आपके लिए आयोजित किया जाता है। तो मैं अपनी रिसोर्स पर्सन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसा कि मैंने बताया, वो दिल्ली 1 से आई हैं, रीजनल सेंटर दिल्ली 1। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि दिल्ली में 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं, उनमें से एक है रीजनल सेंटर दिल्ली 1, जहाँ पर मैडम कार्यरत हैं। और उनसे ही मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने क्षेत्रीय केंद्र के बारे में बताएं कि क्या उसका जुरिस्डिक्शन है, क्या स्टडी सेंटर्स हैं। थोड़ा सा अगर हमारे विद्यार्थी हैं उनके को थोड़ा सा परिचय दें, स्पेशली दिल्ली 1 किन किन कार्यों में मतलब एक्टिवली कार्य करता है या बच्चों के लिए कैसे समाधान करता है समस्याओं का, वो बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनीता। और मैं जैसा कि डॉक्टर विनीता ने कहा कि मैं क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 1 में कार्यरत हूँ। और चूँकि ये प्रोग्राम जो हमारा स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज का है, ये नेशनल टीवी पे लोग देख रहे हैं, तो मैं अपने क्षेत्रीय केंद्र के बारे में हल्की चर्चा करूंगी। और जैसा कि आप जानती हैं डॉक्टर विनीता कि हमारे ऑल ओवर इंडिया 56 रीजनल सेंटर्स हैं इग्नू के, और इन एडिशन टू दीज 56 रीजनल सेंटर्स वी हैव 11 रिकॉग्नाइज्ड रीजनल सेंटर्स जो आर्मी, नेवी और असम राइफल्स में हमारे इस्टेब्लिश्ड हैं। दिल्ली 1 की बात करें तो जैसा डॉक्टर विनीता ने कहा कि हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, इसके अंदर हमारे 4 रीजनल सेंटर्स हैं, 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं। दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3 और एक नोएडा में स्थापित है। तो इन चारों क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से दिल्ली एनसीआर के जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स, वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रांतों से भारत के दिल्ली आते हैं उच्च शिक्षा को हासिल करने के लिए, फॉर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन इन दिल्ली। सो वी नो दैट मेनी स्टूडेंट्स विजिट दिल्ली फॉर दिस पर्पस। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने क्षेत्रीय केंद्रों को इतना सशक्त रखें और हर क्षेत्रीय केंद्र पर, जैसा अभी डॉक्टर विनीता ने कहा, दिल्ली 1 पर हमारे कई कार्यक्रम हैं इग्नू के जो ऑफर में है थ्रू आवर स्टडी सेंटर्स। अब हमारे अध्ययन केंद्र जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में स्थापित हैं और जामिया के कॉलेजेस में स्थापित हैं। और इसके अलावे कुछ कॉलेजेस जो हैं जो हरियाणा में हैं, फरीदाबाद में हैं, पलवल में हैं, वहाँ भी स्थापित हैं। तो इन स्टडी सेंटर्स के माध्यम से हम बच्चों को एकेडमिक सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें उनकी
एकेडमिक काउंसलिंग होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की जो जी एक्टिविटीज़ होती हैं सारा वो किया सारी था। एक्टिविटीज़ जो है हम लोग स्टडी सेंटर्स के माध्यम से कराते हैं। और जो संरचना, जो स्ट्रक्चर दिल्ली 1 के रीजनल सेंटर की है, लगभग वही संरचना, वही स्ट्रक्चर पे जो जितने रीजनल बिल्कुल। सेंटर्स हमारे अक्रॉस इंडिया हैं या वो सारे उसी संरचना पे चलते हैं, उसी जी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो अगर आप दिल्ली में नहीं हैं, आप किसी और इलाके में हैं, जम्मू कश्मीर से हैं या साउथ इंडिया में कहीं से हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं से भी आप हैं, और अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं और अगर आपको विशेष जानकारी और कुछ इग्नू के बारे में चाहिए, क्योंकि इग्नू एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या है, बिल्कुल। तो आप अपने नियरेस्ट रीजनल सेंटर पे, जो आपके सबसे समीप जो क्षेत्रीय केंद्र है, वहाँ जा कर के भी हासिल कर सकते हैं। और वैसे इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in है, और साथ ही जो हमारे 56 रीजनल सेंटर हैं, 56 रीजनल सेंटर्स, इनकी भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं हर रीजनल सेंटर की। तो अगर आपको किसी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जाना है तो आप इग्नू के मेन पेज से रीजनल सेंटर की वेबसाइट तक भी पहुंच सकते हैं और वहाँ उस रीजनल सेंटर के बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। क्षेत्रीय केंद्र 1 पर लगभग 40 से ऊपर प्रोग्राम्स हैं जो एक्टिवेटेड हैं, पीजी डिप्लोमा, डिग्री लेवल के, सर्टिफिकेट लेवल के और डिप्लोमा लेवल के। तो आप दिल्ली क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 1 की वेबसाइट पर जाकर के इन सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर विनीता। जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया समस्त रीजनल सेंटर्स के बारे में भी और फंक्शनिंग कैसे होती है रीजनल सेंटर्स के बारे में भी, क्योंकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको यही बताना चाहते हैं, उनको अवगत कराना चाहते हैं कि इग्नू की फंक्शनिंग कैसी होती है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम की फंक्शनिंग कैसी होती है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फंक्शनिंग रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की होती है वही सेम पैटर्न पर बाकी रीजनल सेंटर्स जो होते हैं वो कार्य करते हैं। रीजनल सेंटर बनाने का सिर्फ एक यही पर्पस रहता है कि आपकी जो क्योंकि सभी विद्यार्थी हेडक्वार्टर नहीं पहुंच सकते हैं या दिल्ली तक नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम जो इग्नू का मोटिव है कि डोर आपके दरवाजे तक, आपके द्वार तक आपको शिक्षा देना, प्रदान करना, तो इसी पर्पस से कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो सके अपने हायर एजुकेशन लेने के लिए। और इसीलिए अलग अलग जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उसमें रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा रीजनल सेंटर्स हैं। और मैं थोड़ा सा एड ऑन और करना चाहूँगी कि इस समय जो है 57 रीजनल सेंटर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। जी जी। तो ये एक बहुत ही मतलब विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सारे बनाए जाते हैं। और जैसा कि मैडम ने बताया, रीजनल सेंटर दिल्ली 1 जो है, क्योंकि हर रीजनल सेंटर का एक अपना ज्यूरिस्डिक्शन है। दिल्ली 1 का है वो कुछ पार्ट हरियाणा का कवर करता है और मोस्टली आई थिंक साउथ दिल्ली का पार्ट कवर करता है दिल्ली का, क्योंकि सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं कि कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक जो उनके वो रिक्वायरमेंट है, डिज़ायर्स हैं, उसको पूरा कर सके। तो यही एक पर्पज़ होता है, यही है। और मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपसे पुनः अनुरोध करती हूँ कि आपका कोई भी सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, चाहे आप इग्नू के एग्जिस्टिंग विद्यार्थी हैं या जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई भी प्रश्न है, आपकी जो स्क्रीन पर नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उनके कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं और हमें बहुत खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देते हुए। मैं आगे डॉक्टर मोनी आपसे पूछना चाहूँगी कि इस समय जैसे जो मार्च का महीना है, मोस्टली इग्नू की जो एक्टिविटीज़ हैं, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि एडमिशन्स का चल ही रहा है, एडमिशन के अलावा भी और क्या होता है जो स्टूडेंट्स के लिए जानना भी ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि जो एग्जिस्टिंग विद्यार्थी है उनको ध्यान में रखते हुए भी, और जो जुड़ने वाले हैं न्यू विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा अपना इनपुट दें। जी डॉक्टर विनीता, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं हर बार कि जो हमारा ये प्रोग्राम होता है एक घंटे का, हम लोग इसमें अपने एग्जिस्टिंग लर्नर्स को भी एड्रेस करते हैं और उनके लिए जो जानकारी महत्वपूर्ण होती है, जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम पहले उनको देते हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं हर माध्यम से। और ये टेलीकॉन्फ्रेंस जो ज्ञान दर्शन के थ्रू आप देख पा रहे हैं, ये भी एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। और इन एडिशन टू दिस, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं जो अभी इग्नू में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या कुछ उनकी वैसी प्लानिंग चल रही है, तो उनके लिए भी मतलब वी हैव अ वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द इग्नू वेबसाइट, बट बिकॉज वी आर हियर इन दिस स्टूडियो, सो वी थॉट दैट वी विल प्रोवाइड यू दोज एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज वेल।
तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की बात करते हैं डॉक्टर विनीता। एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो है, जैसा मैंने अभी कहा कि वो स्टडी सेंटर्स के थ्रू चलती है। तो अभी आपकी जो सबसे पहले प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर आपने एडमिशन कराया है इग्नू में, तो आपको री रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो री रजिस्ट्रेशन है जनवरी 2023 सत्र के लिए, उसकी अंतिम तिथि 10 मार्च 2023 है। तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, और अगर आपने नहीं कराया है अब तक री रजिस्ट्रेशन सक्सेसिव सेमेस्टर में या सक्सेसिव ईयर में, तो आप री रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिए। और जैसा आपको पता होगा, ये जो सारी प्रक्रिया है, ये प्रोसेस जो है री रजिस्ट्रेशन का, ये ऑनलाइन है। तो आप ऑनलाइन जा करके आप री रजिस्ट्रेशन अपना करवा लें। और छोटी मोटी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है, आपने एडमिशन कराया है तो छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें कि आप अपनी फ़ी पेमेंट का जो मोड है उसको अपने पास रेडी रखें। आप एक अच्छे नेटवर्क एरिया में रहें जिससे कि आपको फॉर्म भरने में मुश्किल ना हो, और फ़ी पेमेंट जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं आए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों का ध्यान रखें कि आप एक प्रॉपर नेटवर्क एरिया में रहें, और फ़ी पेमेंट की जो भी आपके पास मोड है उस मोड को रेडी रखें। और कोशिश करें कि ये आपके खुद के क्रेडेंशियल्स हों जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि कई बार डॉक्टर विनीता ऐसा होता है कि हम देखते हैं बच्चे साइबर कैफ़े चले जाते हैं, वहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर जब फ़ी रिफ़ंड या इस तरह की कुछ समस्या आती है तो वो उनके पास न जा करके साइबर कैफ़े के साइबर कैफे अकाउंट में के चली पास। जाती है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम ज़्यादा जो है वो एडमिशन वाले बच्चों के साथ भी होती है। जी। तो अगर आप इग्नू में एडमिशन भी लेना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान जो रखें। नया एडमिशन ले रहे हैं, फ्रेश एडमिशन ले रहे जी हैं, बिल्कुल, उनके लिए भी। जी, बिल्कुल। प्लीज कंटिन्यू। और इसके अलावा अगर आप स्टडी सेंटर पे एसोसिएटेड हैं, आपने एडमिशन ले रखा है, तो आपको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। असाइनमेंट्स हर कोर्स में कंपलसरी है, एंड इन एडिशन टू द असाइनमेंट्स देयर मे बी कोर्सेज वेयर यू विल हैव टू प्रोबेबली डू अ प्रोजेक्ट और राइट अ सिनॉप्सिस एंड देन डू अ प्रोजेक्ट। देयर मे बी कंपोनेंट्स रिलेटेड टू हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, और इस तरह की कंपोनेंट्स अलग अलग प्रोग्राम में हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सुझाव दूंगी कि आप लोग ज़रूर अपने प्रोग्राम गाइड को पढ़िए। अगर प्रोग्राम गाइड एक हम कॉल ले लेते हैं जी पहले, बिल्कुल फिर हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। अपना नाम बताएं। मैडम, मैं MPC-IGNOU का स्टूडेंट हूँ, आपसी चंडीगढ़ है मेरा। जी बताएं, सवाल पूछें। हाँ, सवाल ये है कि हमारा एक तो हमें कोई मैसेज नहीं आता किसी भी प्रकार का, भाई कभी हमारी ऑनलाइन क्लास लगेगी नहीं लगेगी, कोई किसी किस्म की इंटीमेशन नहीं आती हमें। अच्छा, आपके पास आपका ये कहना है कि आपके मोबाइल में कोई मैसेज आपको नहीं मिलता है, राइट? और हाँ क्लासेस जी, के हाँ बारे जी। में। जी, तो यहाँ और पर दिल्ली एक तो वाले नंबरों पे अभी तक बुक्स नहीं आई हमारी, देखो प्रिंटिंग, और मैंने दिल्ली के सभी नंबर मिला लिए, कोई नंबर नहीं उठाता वहाँ। अच्छा, आपका एडमिशन कब का है? हेलो, एडमिशन कब लिया था आपने, कौन से सेशन में? ये इसी सेशन की MA पार्ट 2 की ना, अभी तक हमारी बुक्स जो प्रिंटेड मटेरियल मिलता है वो आया नहीं, अब तक फीस भरी नहीं हुई नहीं है, नहीं, मैंने मई में भर दी थी पिछली बार। जनवरी 2023 का एडमिशन, राइट? नहीं नहीं, जुलाई, अच्छा 22 जुलाई का है। ठीक है, आप है ना एक काम करिए, या तो आप मेल कर दीजिए, नहीं तो आप स्टूडियो में अपना एनरोलमेंट और अपना प्रोग्राम नोट करवा दीजिए, तो आपका जो मैटर है RC चंडीगढ़ से परस्यू करवा देंगे। दूसरा ये है कि आपका जो RC चंडीगढ़ की वेबसाइट है वो अपना काउंसलिंग शेड्यूल वहाँ पर अपलोड वो करते कहते हैं। हैं ना, तो बुक्स हम डील करते हैं, उनको तो नंबर को उठा लिया था, मैंने बात करी थी। जी वो कहते हैं स्टडी मटेरियल आपका दिल्ली से आना है, हाँ, स्टडी और जो SMS आते हैं आपको वो भी दिल्ली से ही आएंगे, हमारी तरफ से नहीं आते। स्टडी मटेरियल जो है वो भी आपको दिल्ली से ही डिलीवर होगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपना एनरोलमेंट चाहें तो आप आप स्टूडियो पे, प्लीज नोट कर लीजिए, अगर कुछ हो सकता है तो देख लीजिए। अगर आप अपना एनरोलमेंट नोट करवाना चाहते हैं यहाँ पे तो ठीक है, करवा दीजिए, नहीं तो फिर आप स्टूडियो में नोट करवा सकते हैं। आप वहाँ से आपका नंबर लेके आपका मैटर परस्यू कर देंगे RC चंडीगढ़ से। अगर आप आपको दोनों ही काम कर दीजिए प्लीज, हमारा एनरोलमेंट नंबर भी लिख लीजिए, 210 210 80 80 79 79 293। 293। कौन सा प्रोग्राम है? MA-JY पार्ट 2। अच्छा, MA-JY। अच्छा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप? हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, मैं इनको एक बात और बताना चाहूँगी जी, डॉक्टर बिल्कुल। विनीता, चूँकि ये ज्योतिष में इन्होंने एडमिशन लिया है, MA ज्योतिष में, तो आपको शायद ये जानकारी गई होगी, या शायद आपने जब एडमिशन फॉर्म भरा होगा तो आपने इसके सॉफ्ट कॉपी ऑफ द स्टडी मटेरियल के लिए ऑप्ट किया होगा, जहाँ तक नहीं, मैं समझ पा रही हूँ। पिछले साल भी मेरे को आया था स्टडी मटेरियल, मैंने उसी को किया था। हार्ड कॉपी ऑप्ट किया है। जी,
तो हार्ड कॉपी के लिए फिर जैसा अभी डॉक्टर विनीता ने कहा कि वो उसको परसू करवा देंगी। और मीनवाइल अगर आपको किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी है तो आप अपने क्षेत्रीय केंद्र पर भी एक ईमेल डाल सकते हैं rcchandigarh@ignou.ac.in। मैंने डाली है मैडम, आज भी डाली है, पहले भी डाली है, एमपीटीडी पे भी डाली है, कोई रिप्लाई नहीं आता। नहीं, आपका डिटेल्स नोट कर लिया है। डेफिनेटली हम यहाँ से परस्यू करेंगे आपका हेडक्वार्टर से, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपका ईमेल आईडी लेके आपको उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है ना? धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी ओके, आपकी। थैंक यू। हाँ, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए, जी आप बता डॉक्टर रहे विनीता, थे। तो हम लोग असाइनमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स असाइनमेंट जो है वो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का एक कंपोनेंट है और हर कोर्स में होता है। जी। और असाइनमेंट सबमिशन की जो डेट है वो अभी फ़िलहाल मार्च में होती है नॉर्मली जनरली सारे कोर्सेज के लिए। और असाइनमेंट अगर आपके पास उपलब्ध है, अगर नहीं उपलब्ध है तो आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जी, स्टूडेंट जोन में डाउनलोड सेक्शन है, और जब आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ सारे प्रोग्राम्स के हर कोर्सेज के असाइनमेंट उपलब्ध है। तो जो भी लेटेस्ट असाइनमेंट है जो अभी करंट सेशन के लिए वैलिड है, उस असाइनमेंट को आप डाउनलोड कर लें, उसको अपने हाथों से अपनी ओन हैंड राइटिंग में लिख करके उसको आप सबमिट कर सकते हैं अपने क्षेत्रीय केंद्र पर। और यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि असाइनमेंट सबमिशन की जो प्रोसीजर है, असाइनमेंट सबमिशन की जो प्रक्रिया है, वो हर रीजनल सेंटर पर अलग अलग कई बार होती है। जैसे दिल्ली क्षेत्रीय केंद्र में हम लोग असाइनमेंट्स ऑनलाइन लेते हैं, पर कई जगह पे असाइनमेंट्स जो है वो ऑफलाइन लेते हैं, स्टडी सेंटर पे लेते हैं। तो आप अगर आपको इसकी जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क में रह करके आप वहाँ से ये जानकारी ले सकते हैं कि आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है। और जैसा मैंने बताया कि प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ये सब भी जो है कुछ कोर्सेज़ के कंपोनेंट्स होते हैं, सारे कोर्सेज़ में नहीं होते हैं। तो अगर आपने किसी वजह से प्रैक्टिकल नहीं किया है या अगर आपने प्रोजेक्ट बनाना था आपको, तो ये सारी चीज़ें जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ आपसे डिज़ायर्ड हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ को आप एक बार देख लें कि आपके लिए क्या करना बाकी है। और जैसा मैंने कहा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या आपको करना है, कब करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके प्रोग्राम गाइड में कंटेन्ड है, आपके प्रोग्राम गाइड में उपलब्ध कराई गई है। अगर आपके पास प्रोग्राम गाइड है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप ई ज्ञान कोश से अपनी प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। ई ज्ञान कोश हमारी ऑनलाइन रिपोजिटरी है जहाँ पे इग्नू के सारे प्रोग्राम्स के सारे स्टडी मटेरियल्स की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध है, और ये ओपन एक्सेस है। आपको यहाँ पे जा कर के स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए, प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करने के लिए किसी तरह की कोई फ़ी पेमेंट नहीं करनी है। तो ये ओपन एक्सेस रिपोजिटरी है, आप लोग ज़रूर विजिट करें, प्रोग्राम गाइड भी डाउनलोड करें। एंड इन एडिशन टू दैट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द स्टडी मटेरियल जो आपको नहीं मिला है, कई बार विद्यार्थी बोलते हैं, तो आप वो भी वहाँ से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और जी डॉक्टर विनीता। जी, मैं वही ऐड ऑन करना चाह रही थी कि अभी जो हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कॉल किया था, वो स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग ही बात कर रहे थे कि उनको किताबें नहीं मिली हैं, तो वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ई ज्ञान कोश पर जाकर आप अपना जो आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम से संबंधित आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ई ज्ञान कोश पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ स्कूल वाइज अरेंज की गई हैं। बिल्कुल। तो आपको मालूम ही होगा कि आपका प्रोग्राम जो है किस स्कूल के अंतर्गत आता है, किस स्कूल के अंडर से आपका प्रोग्राम डिलीवर होता है। तो आप उस स्कूल में जाके, और उस स्कूल में अलग अलग लेबल दिए हुए हैं कि यूजी है, पीजी है या सर्टिफिकेटेड डिप्लोमा है, इन सबको एक्सेस करते हुए आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि आप जो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मुनी साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जो हमारे एग्जिस्टिंग विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है इस समय, उनके लिए क्या अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ है जो उनको करना चाहिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। और असाइनमेंट का जैसे कि बताया कि भी आपको वैलिडिटी आपको कहाँ चेक करनी है, असाइनमेंट का जो कवर पेज होता है उसी पर लिखा रहता है कि ये असाइनमेंट जो है किस सेशन के लिए वैलिड है। तो आप जिस सेशन में भी लिख रहे हैं, आप उस सेशन के हिसाब से और आपके अपने सेशन को ध्यान में रखते हुए आप उसी सेशन के असाइनमेंट लिखेंगे। हैंड रिटन असाइनमेंट आपको जैसा कि बताया गया कि कहाँ सबमिट करने हैं, भाई आपके स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर है, ऑनलाइन सबमिट करने, ऑफलाइन सबमिट करने, ये सारी सूचनाएं आपको अपने क्षेत्रीय केंद्र, रीजनल सेंटर या आपको अपने स्टडी सेंटर से मिल जाती हैं, वहीं से मिल सकती हैं। या तो आप विजिट भी कर सकते हैं और नहीं तो आप वेबसाइट के माध्यम से भी ये सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।
वेबसाइट का जहाँ तक है कि जहाँ दो तरह की वेबसाइट्स अगर हम देखते हैं तो दो तरह की वेबसाइट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। एक इग्नू की मेन वेबसाइट है जो कि मैडम ने स्टार्टिंग में ही बताया था, ignou.ac.in, और इसके अलावा हर रीजनल सेंटर की अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट है। जो मेन वेबसाइट होती है वहाँ पर वो एक्टिविटीज़ आपको शेयर की जाती हैं जो एक कॉमन सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटीज़ होती हैं और जो यहाँ हेडक्वार्टर से संचालित होती हैं। साथ ही जो क्षेत्रीय केंद्र की अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट्स हैं सभी 57 रीजनल सेंटर्स की, उन क्षेत्रीय केंद्रों के आपकी जो संबंधित रीजनल सेंटर्स हैं वहाँ पर क्या गतिविधि हो रही है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपलोड की जाती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों वेबसाइट को रेगुलरली फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहिएगा जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। दूसरा, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके और कोई सवाल हैं इसके अलावा हम डिस्कशन में आप जुड़ना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आप उनके माध्यम से कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर मोनी आपसे जानना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो एग्जिस्टिंग विद्यार्थियों को क्या क्या इस समय स्पेशली इन दिस मंथ क्या क्या करना चाहिए। जो नए विद्यार्थी हैं उनके थोड़ा सा उनको भी गाइड कीजिए कि कम से कम जो जुड़े इग्नू से और अपने हायर एजुकेशन की जो इनकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो पूरा कर सकें। जी डॉक्टर विनीता, एक इन्फॉर्मेशन और है जो मैं एग्जिस्टिंग लर्नर्स को देना चाहूँगी, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू टर्म एंड एग्जाम जून 2023, क्योंकि ये एग्जाम या एंड बिकॉज स्टूडेंट्स हैव दिस डाउट दैट नाउ दैट they have completed the program and they want to appear for the term end exam. तो आप अभी जून 2023 टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, और एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो भी ऑनलाइन है। और आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो 6 मार्च से हमारे जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो अब एग्जिस्ट कर रही है। तो 6 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 2023 तक आप बिना किसी लेट फीस के एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं जून 2023 एग्ज़ाम के लिए। और इसमें जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो 200 रुपये है पर कोर्स के लिए, और इसमें कोई लेट फीस नहीं है। और 6 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल 2023 तक आप 500 रुपये लेट फीस के साथ आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपने नहीं भरा है तो 26 अप्रैल के बाद भी आप 1100 रुपये लेट फीस के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। मगर मैं आपको यही सुझाव दूंगी, और हर बार हम लोग यही बात कहते हैं कि आप अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करिए, और आप लोग बिल्कुल यथा समय अपने फॉर्म को भर दीजिए अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो। और एग्ज़ाम सेंटर जो आप भरेंगे, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हैं। चाहे आप किसी और रीजनल सेंटर के भी विद्यार्थी हों और एग्ज़ाम आप कहीं और देना चाहते हैं तो इग्नू में ये संभव है, आप ऐसा कर सकते हैं। पर आपने जो चॉइस एग्ज़ाम फॉर्म में दी है अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए, उसके बाद जब फॉर्म भरने के बाद उसमें कोई चेंज होने की संभावना नहीं होती है, कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो आप बिल्कुल अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें और फॉर्म भर दें जल्दी से जल्दी। और डॉक्टर विनीता, जैसा आपने कहा कि हमारे जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं उनको हम लोग, सॉरी मैं थोड़ा सा ब्रेक रोकना चाहूँगी आपको। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर आपने जब एग्ज़ाम का बताया कि भाई एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं जून टर्मेंट के लिए, तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी भी बता दीजिए, कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम में। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जिन भी बच्चों ने जिन्होंने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, चाहे वो जनवरी 23 के लिए लिया हो या फिर उसके पहले किसी सेशन में लिया हो, तो अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो आप अपने प्रोग्राम पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें पहली एलिजिबिलिटी आपके 6 महीने के अंदर हो जाती है एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर आपने जनवरी 23 में एडमिशन लिया है तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो आपकी एलिजिबिलिटी जून 2023 में होगी एग्ज़ाम देने की पहली बार। पर जैसे कि हमारे कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं, जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जितने भी हमारे 6 महीने के ड्यूरेशन के हैं, उन सब की एलिजिबिलिटी 6 महीने के बाद हो जाती है और आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जैसे हमारे MCA प्रोग्राम है, BCA प्रोग्राम्स हैं डॉक्टर विनीता, ये सारे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम। जी, तो आप जैसे ही एक सेमेस्टर 6 महीने का कंप्लीट करते हैं और सेकेंड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आप बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। पर अगर आपने किसी ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे हमारे PG प्रोग्राम्स, जैसे मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरीके के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें अगर आपने फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन कराया है जुलाई 2022 में, तो जून 2023 के टर्म एंड एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं। उसमें आपको 1 वर्ष की जो न्यूनतम अवधि है, जो मिनिमम ड्यूरेशन है 1 साल का, वो आपको पूरा करना होता है, एंड देन यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द एग्जाम्स। इफ यू हैव रजिस्टर्ड इन जुलाई 21,
then you will be eligible to appear for exam of both the years, first year as well as second Second year. years. जी डॉक्टर विनीता. तो मतलब ये कि जो विद्यार्थी चाहे वो सेमेस्टर प्रोग्राम में है या किसी भी 6 मंथ ड्यूरेशन के प्रोग्राम में, और इवन उन्होंने जनवरी 2023 में भी एडमिशन लिया है, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं. आप भी अपना फॉर्म डाल सकते हैं, आप भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको एनरोलमेंट मिल गया है, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, आपका एनरोलमेंट मिल गया है, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं. तो आपको यही एडवाइस करेंगे कि आपके माइंड में ये भी, बच्चों के माइंड में कई बार ये रहता है कि अभी तो मेरा एडमिशन अभी हुआ है, मेरा क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन ये आपके लिए अवसर होता है कि आप एडमिशन के बाद ही आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी भर सकते हैं. और एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी, चाहे वो क्लासेस हो गई, असाइनमेंट सबमिशन हो गया, साइमल्टेनियसली ये भी चलता रहेगा. तो आप भी अपना फॉर्म इसमें भर दीजिए, जिससे कि आपका जो प्रोग्राम है 6 मंथ ड्यूरेशन का आपसे टाइम से कंप्लीट हो जाए. अब वही हम अपना. और डॉक्टर विनीता एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है जो अभी सवाल जो विद्यार्थी ने उठाया था कि उनको कोई जानकारी नहीं मिलती है क्षेत्रीय केंद्र से, तो इसके बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूँगी उनको भी और सारे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी, कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एडमिशन टाइम पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराते हैं रीजनल सेंटर पे अपने एडमिशन फॉर्म में. तो वो जो आपने ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड कराया, आमतौर पर हमारी जो भी कम्युनिकेशन होती है रीजनल सेंटर से वो उसी फ़ोन नंबर और उसी ईमेल आईडी पर होती है. पर कई बार क्या होता है कि बच्चों ने ईमेल बनाया, फिर उनका इनबॉक्स भर जाता है, वो दूसरी ईमेल आईडी बना लेते हैं, फ़ोन नंबर चेंज कर लेते हैं, पर इसकी जानकारी वो लोग रीजनल सेंटर को देना भूल जाते हैं. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारी तरफ से कम्युनिकेशन जाता है पर उन तक पहुँच नहीं पाता है. तो अगर आपने अपना फ़ोन नंबर बदला है या ईमेल आईडी आपका इनबॉक्स फुल हो गया, आपने चेंज किया है, तो इन सारी बातों की जानकारी, या आपने एड्रेस चेंज किया है जिससे आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो इन सारी बातों की जानकारी आप अपने क्षेत्रीय केंद्र पर ज़रूर दें, क्योंकि ये हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेटेड करना होता है. सारे रिकॉर्ड्स में फिर से हमें नई जानकारी डालनी पड़ती है ताकि हमारा संपर्क, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट्स के साथ लगातार बना रहे. तो कह सकते हैं डॉक्टर विनीता दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो लाइज विद द स्टूडेंट्स, दैट दे हैव टू गेट देयर रिकॉर्ड्स अपडेटेड फ्रॉम time to time, if at all it is changing at their end, be it their address, be it their email ID, or even be their phone numbers. So please keep this in your minds that if you're changing your records, then please update it at the regional center end. जी डॉक्टर विनीता. मतलब पहले तो ये कि आप कोशिश करें कि आपको चेंज करने का नौबत ही ना आए. आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपना चाहे ईमेल आईडी दिया है, चाहे फ़ोन नंबर दिया है, उसको ही कंटिन्यू करें थ्रू आउट द स्टडी. जो भी आप 2 साल 3 साल का पीरियड है, जितना भी आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन है, मिनिमम ड्यूरेशन है आपकी स्टडी का, तब तक आप उसको कैरी करें. अगर आपको चेंज भी करना पड़ता है तो उसका अपडेशन आप ज़रूर कराएं. आप रीजनल सेंटर पर उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपने नंबर चेंज कर लिया है, आपने ईमेल आईडी चेंज कर लिया, जिससे कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती है, आपको वो सारी जानकारियाँ आपको टाइम से मिलती रहें और आपको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े. अब हम अगेन अपने उसी पार्ट पर आते हैं कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ जानकारी साझा करेंगे. तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके बताएं कि हाँ भाई, इस समय एग्जिस्टिंग विद्यार्थी को स्पेशली वही एडमिशन के थ्रू ही वो जुड़ते हैं और आते हैं, तो एडमिशन से संबंधित आप जो उनको बताना चाहेंगे जानकारी. तो जी डॉक्टर विनीता, थैंक यू सो मच. और जैसा हम लोग बता रहे थे कि अब हम अपने थोड़े प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स को भी गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से. तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था कि नामांकन की जनवरी 2023 सेशन में नामांकन की यानी एडमिशन की अंतिम तिथि भी 10 मार्च है. तो आपके पास फिर भी अभी समय है. आप चाहें तो आप, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इग्नू में एडमिशन लेना है, तो आप बिल्कुल अपना मन बना सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं. इग्नू में 2 तरीके के प्रोग्राम्स चलते हैं डॉक्टर विनीता, 2 माध्यम से बल्कि मुझे कहना चाहिए. एक हमारे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें लगभग 200 से भी ऊपर प्रोग्राम्स हैं जो पीजी लेवल के हैं, डिग्री लेवल के हैं, सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स हैं. मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगी अभी हम, क्योंकि अब ब्रेक का टाइम हो रहा है और अभी हम अपनी बातचीत अभी ब्रेक के बाद तक जारी रखेंगे. तो रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे स्टूडियो से ही कि ब्रेक का जो
We welcome you to join the bouquet of programs offered by the School of Humanities, the Indira Gandhi National Open University, New Delhi. The Indira Gandhi National Open University, New Delhi is a mega university today. It was created by an Act of Parliament in 1985. It is the world's largest university with an enrollment of about 3.5 million current students and 3.2 million alumni. IGNOU has also been accorded the highest grade of academic excellence, A++, by the National Assessment and Accreditation Council, or the NAC. Now, during your time at IGNOU as a learner, we will help you complete your program of study with world-class printed materials, audio and video programs. We have more than 35,000 academic counselors who will guide you till you complete your program of study. We also provide live interaction with your teachers at the headquarters via teleconferencing mode and live interactive radio counseling besides this, supported by regular TV and radio broadcasts. The School of Humanities was created in 1988, and we welcome you warmly to join any of our programs of study. IGNOU degrees, diplomas, and certificates are recognized not only in the country but are also very well received across the globe. We look forward to your journey with us, and we welcome you once again. Now we shall talk about the postgraduate diploma in American literature, and its code is PGDAML. Now, the School of Humanities also offers 6 PG diplomas in various aspects of literature. Now, the postgraduate diploma in American literature, what it does, it sensitizes learners to different genres and aspects of American literature, such as the major American novelists and their works. Then we look at the major American dramatists. We look at the specificities of American poetry. How did it start? And we bring it up to the modern period. And lastly, we also look at something which is an integral part of the curricula in colleges and universities across the globe, which is literary theory and criticism. So we begin from classical times. We include romantic criticism, new criticism, feminist theories, deconstruction, and we come down to contemporary theories. The eligibility for the postgraduate diploma in American literature is a bachelor's degree or a higher degree from a recognized university. The medium of instruction is English. The duration is between 1 and 3 years. Your minimum period is 1 year, the maximum 3 years. And this program is offered in both the January and July cycles of admission. The fee is ₹7,000 plus 300 rupees for registration at the time of admission. So in this particular PG diploma, we have a compulsory component, which is MEG5, Literary Theory and Criticism, and then you choose any 3 courses. So you have a choice between MEG6, American Literature, MEG11, American Novel, MEG17, American Drama, or MEG18, American Poetry. So you choose 3 of these, and the 4th one is your MEG5, and you complete your PG diploma in American Literature. Now, if you look at your screen very quickly, that is what the syllabus is comprised of, which I already told you right in the beginning. For further details on the PG Diploma in American Literature, you can log on to www.ignou.ac.in, or you can write to the program coordinator, whose details are on your screen. Now that I've given you the details of the program, I hope you enroll for it, and we will guide you through it. We will help you. We are with you every step of the way. So good luck with your program of study.
एक बार पुनः आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि जो नए विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या इस समय स्पेशल इम्पॉर्टेंट है जो कि उनके लिए जानना ज़रूरी है। तो वही हम अपने रिसोर्स पर्सन, जो हमारे रिसोर्स पर्सन आज के कार्यक्रम के हैं, डॉक्टर मुनी साहब, उनसे चर्चा करते हैं। हाँ, आप हम बता रहे थे कि जो ऑनलाइन एंड ओडीएल प्रोग्राम के बारे में, तो मैं चाहती थी उसको थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिए। जी बिल्कुल। तो जैसा मैं बता रही थी कि हमारे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में प्रोग्राम्स चलते हैं और ऑनलाइन मोड में भी चलते हैं। अब फ़र्क ये है कि जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में जो हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं ये लगभग 200 से ऊपर हैं। और जैसा मैंने बताया कि अलग अलग लेवल्स पे हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट, पीजी डिग्री और डिग्री लेवल पे। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं इसमें आप नामांकन करा सकते हैं। और इसमें जो सुविधाएं हैं जिनको हम एकेडमिक सपोर्ट सर्विसेज या स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज कहते हैं, ये सारी सुविधाएं आपको रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के माध्यम से मिलेंगी। आपके पास जो भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी सेंटर पे जाएंगे, काउंसलिंग सेशंस अटेंड करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स जैसा मैं अभी बता रही थी, ये सारे एक्टिविटीज़। माफ़ कीजिए डॉक्टर विनीता, मैं थोड़ा हाँ प्लीज़ आप पढ़ने ले लीजिए। जी। तो ये सारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप स्टडी सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है उसमें भी हमारे लगभग 40 प्रोग्राम जो हैं वो ऑफ़र में हैं। और ये सारे प्रोग्राम्स में आपको जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे एकेडमिक काउंसलिंग हुई या अदर जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो एलएमएस के माध्यम से होंगी, जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। उस पे सारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ आपकी होंगी और काउंसलिंग भी आपकी ऑनलाइन ही होंगी। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं कि हमारे ओडीएल मोड में क्या प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन मोड में क्या प्रोग्राम्स हैं, तो आप इग्नू की वेबसाइट पे जा सकते हैं। और जो ओडीएल प्रोग्राम्स का हमारा जो वेबसाइट है वो है ignuadmission.samarth.edu.in। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, ignuadmission.samarth.edu.in। और सिमिलरली जो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं उसका भी हमारा सेपरेट वेबसाइट है और वो वेबसाइट है ignuiop.samarth.edu.in। जैसा आप देख सकते हैं, डॉक्टर विनीता आपको स्क्रीन पर भी दिखा रही हैं जो जानकारी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको सारी प्रोग्राम्स जो ऑफर में हैं उसकी जानकारी समर्थ पोर्टल पे आपको दी हुई है, जिस प्रोग्राम्स में एडमिशन होना है। ये सारे प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसकी भी अभी डॉक्टर विनीता ने आपको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाया है कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी जो हमारे ऑफर में हैं वो उपलब्ध है ignuiop.samarth.edu.in। जो प्रक्रिया है एडमिशन की, आपको अपने एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, आपको फ़ीस भरनी होती है, आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना होता है। तो जब आप एडमिशन के लिए बैठते हैं और आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बैठते हैं तो इन सारी चीज़ों को अपने पास बिल्कुल रेडिली अवेलेबल रखें और डॉक्यूमेंट की साइज़ देख लें कि आपको केबी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या एमबी में करना है। उसी कैपेसिटी की, उसी साइज़ की डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखें, सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल सिग्नेचर। और जैसा मैंने पहले भी एक वर्ड ऑफ कॉशन दिया था कि आप लोग जब ट्रांजैक्शन करें फीस की तो वो ट्रांजैक्शन आपके खुद के जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं बैंक के या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के, उससे करें, ताकि अगर फीस रिफंड की कहीं कोई संभावना होती है या किसी तरीके से अगर फ़ी डिपॉजिट नहीं होता है, क्रेडिट नहीं होता है, तो आप ही के अकाउंट में रिफंड होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर विनीता, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये तो हमारे पोर्टल के बारे में जानकारी थी, अंतिम तिथि हमने बताया कि 10 मार्च है, पर कई बार स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एडमिशन किस प्रोग्राम में लेना है। और ये सवाल मेरे ख्याल से हर उस बच्चे के मन में आता है जो एडमिशन लेने की सोचता है इग्नू में। और इग्नू में बहुत तरीके की फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं। जैसा हम जानते हैं कि आप अपनी जगह पर रह कर पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में बताया था कि आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी एरिया में रिसाइड करते हैं आप वहाँ से कार्यक्रम को परसू कर सकते हैं। इग्नू में जो फीस है हमारे प्रोग्राम्स की वो काफ़ी सब्सिडाइज्ड है और फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। और अगर आप प्रोग्राम को किसी वजह से मिनिमम ड्यूरेशन में नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्सटेंडेड टाइम भी मिलता है। मतलब बहुत सारे आपको फ्लेक्सिबिलिटीज यहाँ पर मिलती हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अट्रैक्शन है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड की और इग्नू की, क्योंकि इग्नू इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट।
लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि हम एडमिशन किस प्रोग्राम में लें, तो मेरा एक सुझाव ही मैं कहूँगी आप लोगों को रहेगा कि आप लोग अपने बैकग्राउंड को देखिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए और अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल को देखिए। अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं और अगर आपने एजुकेशन में आप टीचर हैं, कहीं आप पढ़ा रहे हैं, या आप हायर एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन या किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन पे अगर जुड़े हुए हैं, तो आपको इग्नू में स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्रोग्राम्स को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये ना आपके प्रोफाइल में वैल्यू ऐड करेगा, बल्कि आपको नई जानकारियाँ और नए आयामों के बारे में भी बताएगा जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। जी जी। और कुछ प्रोग्राम्स जो स्कूल ऑफ एजुकेशन के हैं वो मैं आपको सिर्फ एक बार दोहरा दे रही हूँ। वैसे मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूँगी कि आप लोग इग्नू की वेबसाइट पर जाएं और जो हमारे स्कूल्स ऑफ स्टडी हैं वहाँ पर जाकर ये प्रोग्राम्स की डिटेल गाइडलाइंस को देखें। जैसा कि आपको डॉक्टर विनीता दिखा भी रही है स्क्रीन पर कि जब आप स्कूल्स ऑफ स्टडी में जाएंगे तो आप देखेंगे स्कूल ऑफ एजुकेशन की, जैसे मैंने बात की, वहाँ पे मास्टर्स लेवल पे हमारे पास मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन है, मास्टर्स इन एडल्ट एजुकेशन है और कई प्रोग्राम्स हैं। उसी तरीके से पीजी डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा लेवल पे हमारे पास प्रोग्राम्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडल्ट एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में नहीं, कन्वेंशनल सिस्टम में भी और हर लेवल पे, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन के लेवल तक टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन में इंटीग्रेट हो चुकी है। तो अगर आपको अपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी के नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड करना है तो डिसाइडेडली आपको स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्रोग्राम्स देखने चाहिए। सिमिलरली अगर आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं और आप आईटी सेक्टर में प्रोफेशनल हैं तो आपको स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के प्रोग्राम्स देखने चाहिए, जहाँ पे पीजी लेवल से लेकर के सर्टिफिकेट लेवल तक के प्रोग्राम्स हैं और काफ़ी रेलिवेंट प्रोग्राम्स हैं डॉक्टर विनीता, जैसे सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आजकल ऐप्स पे ही हमारे कई काम जो है वो ऐप के माध्यम से होते हैं, तो आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ अ बिगनर्स लेवल प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर्स, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द कंप्यूटर्स। और इसी तरीके के और प्रोग्राम्स हैं। और अगर आप किसी भी तरीके से कृषि से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हैं या इस तरीके की गतिविधियों से जुड़े हैं तो आप स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी ही रेलिवेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे मास्टर्स ऑफ साइंस इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट हैं और भी कई प्रोग्राम्स हैं। डिप्लोमा लेवल पे पीजी डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस है और डिप्लोमा लेवल पे डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर है, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। और सर्टिफिकेट लेवल पे भी काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन सेरीकल्चर, सर्टिफिकेट इन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसी तरीके से अगर मैं दो चार, क्योंकि हमारे तो 21 स्कूल्स ऑफ स्टडी है डॉक्टर विनीता, पर दो चार स्कूल्स के बारे में मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ और बाकी मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद एक्सप्लोर करिए इग्नू की वेबसाइट पे जा करके। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ है। अगर आप किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं और आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप SOJNM स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ की वेबसाइट को देख सकते हैं। एंड सिमिलरली डॉक्टर विनीता, आई थिंक आजकल बहुत लोग लैंग्वेज में स्पेशलाइज करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपने हिंदी हम लोग आमूमन जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, अंग्रेजी भाषा भी बहुत कॉमन है, पर अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज में डिग्री या डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो आप इग्नू में स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस की वेबसाइट पे ज़रूर जाइए, वेब लिंक पर जाइए और वहाँ कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन फ्रेंच लैंग्वेज है, सर्टिफिकेट इन स्पेनिश है, सर्टिफिकेट इन अरबिक है, उर्दू है और कई सारे, जर्मन है। तो कई सारी भाषाओं के भी सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स जो है वो इग्नू में ऑफर में है। तो अगर आप किसी लैंग्वेज में स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जैसा आजकल हम लोग कहते हैं डॉक्टर विनीता कि स्किल और एजुकेशन दोनों सेपरेट नहीं है, अब दोनों इंटीग्रेट हो चुके हैं। और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसका फोकस भी दोनों के इंटीग्रेशन पे है कि आपको स्किल्स भी मिले और आपको एजुकेशन भी मिले। तो अगर ये दोनों फोकस है तो आप अपने आप को किसी एक कंपार्टमेंट में कन्फाइन मत करिए। मेरा सभी स्टूडेंट्स, सभी व्यूअर्स से ये आग्रह है कि आप लोग भी अपने स्किल को भी बढ़ाइए
और एजुकेशन को भी बढ़ाइए। आप चाहें तो अगर आपने इग्नू में कोई डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने की ठानी है तो साइमल्टेनियसली आप किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं जो कि स्किल ओरिएंटेड है। तो इस तरीके से आपकी एजुकेशन भी बढ़ेगी, आपकी स्किल्स भी बढ़ेगी। और अगर आपको कोई न्यू फील्ड डिसाइड करना है, ये तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपने इंटरेस्ट की एरिया के स्कूल के कोर्सेज को देख सकते हैं, और अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नए कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं, उन कोर्सेज को या उन प्रोग्राम्स को जिसमें आप फर्दर करियर बनाना चाहते हैं। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग एजुकेशन और हैविंग skills which can be productive, which can support you, which can provide you with a livelihood or maybe a job opportunity। क्योंकि ये सारी जो मुशक्क़त होती है पढ़ाई की वो इसीलिए होती है कि हम लोग एक अच्छा सेटलमेंट लाइफ में पा सकें। बिल्कुल मेरा आप लोगों से यही आग्रह रहेगा कि आप लोग एक बार अपने इंटरेस्ट को देखिए और अपने स्किल्स को भी साइमल्टेनियसली एजुकेशन के साथ आप बढ़ाइए और साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आपने डिग्री प्रोग्राम में लिया है तो साइमल्टेनियसली आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके लिए आप इग्नू की जो 21 स्कूल्स ऑफ स्टडी हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाइए और उनकी वेबसाइट पर जाकर के जो प्रोग्राम्स ऑफर में है, क्योंकि स्टूडियो में समय की जो एक हमारे पास लिमिटेशंस है और जो हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन की भी लिमिटेशन होती है क्योंकि सब चीज़ यहाँ पे हम लोग नहीं ला सकते हैं। तो पर इग्नू की वेबसाइट जो है वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद है, सेल्फ कंटेन्ड है और आप वहाँ जाकर के फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग आपको एक दिशा दे सकते हैं, फर्दर एक्सप्लोरेशन आपके ऊपर है। बिल्कुल जी डॉक्टर विनीता जी, आपने बहुत ही अच्छा विद्यार्थियों को गाइडेंस दिया, स्पेशली जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपका जो वक्तव्य रहा। और मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थियों को काफ़ी इसमें जानकारी प्राप्त की गई है विद्यार्थियों द्वारा। और साथ ही जैसा कि आपने बताया कि स्किल बहुत ही आजकल बिल्कुल इंटीग्रेटेड है, या डेफिनेटली एकेडमिक है उससे जो कंटेंट से स्किल इंटीग्रेटेड है। तो जैसा कि आपने बताया कि इग्नू में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम हैं या एड ऑन प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं कि आप ऑलरेडी किसी डिग्री डिप्लोमा आप होल्डर हैं तो आप बहुत सारे एड ऑन चीज़ें भी आप अपने 6 मंथ के जो सर्टिफिकेट हैं स्पेशली उनको ज्वाइन करके भी आप अपने लिए एक स्किल का एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जैसा कि मैडम ने बताया कि हमारे यहाँ 21 स्कूल्स हैं, 21 एकेडमिक स्कूल्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम और डिफरेंट डिसिप्लिन में इंटरडिसिप्लिनरी हैं, इस डिफरेंट उसके ट्रांसडिसिप्लिनरी भी हैं। आप उन प्रोग्राम्स का आप लाभ उठा सकते हैं। आप स्कूल के साथ साथ जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है जिसमें हर प्रोग्राम का, सारे प्रोग्राम्स का जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे वो डिग्री लेवल के हैं, डिप्लोमा लेवल के हैं या सर्टिफिकेट के हैं, सबकी जानकारी दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी उसमें दिया गया है और साथ ही फीस स्ट्रक्चर क्या है, मोड ऑफ प्रोग्राम मीन्स और जो मीडियम ऑफ द प्रोग्राम है, सारी चीज़ें उसमें दी हैं। तो डेफिनेटली आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी आप वहाँ प्रॉस्पेक्टस से भी ले सकते हैं। तो आपके लिए इग्नू की जो वेबसाइट है उस पर विज़िट करना बहुत ज़रूरी है और उम्मीद करते हैं कि आप उसको देखेंगे। और साथ ही ये जो कार्यक्रम होता है ये प्रत्येक मंगलवार को 3 से 4 बजे होता है ज्ञान दर्शन के पर। ये कार्यक्रम आपके लिए ही ओपन सेशन के नाम से ये कार्यक्रम है, स्टूडेंट सपोर्ट के लिए होता है, स्टूडेंट सपोर्ट पर होता है। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन या कुछ जानकारी चाहिए तो टेलीफ़ोन के माध्यम से आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और टेलीफ़ोन नंबर्स जो हैं नीचे आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, आप उनसे हमें कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो मैं आपसे फर्दर जानकारी चाहूँगी कि जैसे ओपन एंड ओडीएल का आपने बताया, ठीक है, ऑनलाइन एंड ओडीएल का ऑनलाइन प्रोग्राम में सारी चीज़ें अपने का एलएमएस के माध्यम से होती हैं। तो एज ए मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या इक्विप्ड होना चाहिए, स्पेशली जब आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं? क्योंकि जो ऑनलाइन में बच्चों ने एडमिशन लिया कई बार उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो बाद में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमें ओडीएल में लेना चाहिए था। काफ़ी ऐसे केसेस थोड़े से आए हैं पीछे कि भाई हमें वो ज़्यादा वो नहीं हो पाते। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या सावधानी उनको रखनी चाहिए, स्पेशली जब वो ऑनलाइन में एडमिशन लेते हैं? दूसरा, उनको अपने आप को किस ढंग से इक्विप्ड और स्किल्ड होना चाहिए कि वो ऑनलाइन में एडमिशन लें? मैं थोड़ा सा चाहती हूँ। जी डॉक्टर विनीता, ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सवाल है और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी सवाल है जी। तो मुझे लगता है पहले जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, हर बार कहती हूँ और हर चीज़ के लिए कहती हूँ कि बच्चों को अपने
अपने आप को पहले इवैल्यूएट करना होगा। सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। आप जियोग्राफिकली कहीं भी लोकेटेड हो सकते हैं, आप दिल्ली में हो सकते हैं, आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में हो सकते हैं। तो आप अपने आप को पहले आंकिए, अपने आप को इवैल्यूएट करिए कि आप किस स्थिति में हैं। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे बहुत अच्छे नेटवर्क्स हैं, हमारे इंटरनेट के कनेक्शंस हैं और सब कुछ अच्छा है, आप टेक्नोलॉजिकली काफ़ी आप नॉलेज रखते हैं, तो फिर आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, आप ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमारे जैसे जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं डॉक्टर विनीता, जहाँ अभी भी नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, रिमोट एरियाज है, रूरल एरियाज है, और अगर ऐसे जगह पे नेटवर्क नहीं है या आप मोबाइल या स्मार्टफोन या लैपटॉप या पीसी चलाने में उतने सक्षम नहीं है, तो फिर आपको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ऑनलाइन उतनी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी जितनी कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स में करनी होती है। तो आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए, अपने जोग्राफिकल लोकेशन को, अपने पर्सनल जो आपके कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इवैल्यूएट करिए, असेस करिए, और उसी हिसाब से आप ओडीएल या ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्टर विनीता, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर इग्नू के प्रोग्राम्स के बारे में इनको बच्चों को अगर जानकारी हासिल करनी है तो इग्नू में एक हमारा व्यास पोर्टल है जिसको हम कहते हैं WEAS, वेब एनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट। तो जब आप इग्नू की मेन पेज पे जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे में व्यास सपोर्ट जो है हमारा वेब एनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट, इसका एक लिंक है। जब आप यहाँ जाएंगे तो कई प्रोग्राम्स के बारे में जिनके वीडियोस डेवलप हो चुके हैं, वो वीडियो प्रोग्राम्स के माध्यम से उन कार्यक्रमों के बारे में, उन प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी दी गई है। तो अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है, जैसा डॉक्टर विनीता ने बताया कि आप कॉमन प्रॉस्पेक्टस को रेफर कर सकते हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाती है तो आप व्यास पोर्टल पे जा करके कई प्रोग्राम्स के बारे में वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। वो भी हमारा एक एडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जहाँ पर आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। और डॉक्टर विनीता, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, चूँकि हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो एक तो जो हमारे पास आउट लर्नर्स हैं जिन्होंने इग्नू से अपने कार्यक्रम को कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि सबको पता होगा कि 36वां कॉन्वोकेशन जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का, वो 3 अप्रैल को होना तय हुआ है। तो और ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने दिसंबर 2021 या जून 2022 के टर्म एंड एग्ज़ाम में अपने कोर्सेज़ को पूरा कर लिया या अपने प्रोग्राम को पूरा कर लिया है। तो अगर आप दिसंबर 2021 या जून 2022 में आपने पूरा कर लिया है अपने प्रोग्राम को, तो आप कॉन्वोकेशन के लिए और डिग्री लेने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है इग्नू की मेन पेज पे जब आप जाएंगे www.ignou.ac.in, तो मेन पेज पर ही इसकी लिंक मौजूद है। एक कॉल ले लेते हैं हम पहले। जी, हेलो जी, नाम बताएं, अपना सवाल पूछें। मैम, मेरा नाम चैतन्य है जी। मैम, मेरा ये सवाल था कि जो हेलो मैम, मेरा नाम चैतन्य था। हाँ, बताएं। मैम, मेरा ये सवाल था, जो मैंने अभी एक रिसेंटली कोर्स देखा था, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर का। हाँ मैम, उसमें मुझे एडमिशन लेना था। जी, आपको एडमिशन लेना है तो आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप मैम, मुझे ये जानना था कि जब ऑनलाइन अगर मैं एडमिशन लेता हूँ, हाँ, तो मैम उसमें जो है एप्लीकेशन के माध्यम से मुझे स्टडी करना होगा या कोई यूट्यूब चैनल या फिर जो चैनल आता है टीवी में ज्ञान दर्शन, उसके माध्यम से मुझे ऑनलाइन करना पड़ेगा? देखिए, आप उसमें एमए में एडमिशन लेते हैं, आप ओडीएल प्रोग्राम में, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको किताबें मिलेंगी। आप किताबों का अगर ऑप्शन लेते हैं तो आपको किताबें मिलेंगी, हार्ड कॉपीज़ मिलेंगी किताबों की, उसके माध्यम से आप पढ़ाई करेंगे। साथ ही आपको एक स्टडी सेंटर का आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। आप स्टडी सेंटर पे जाके वहाँ क्लासेस जो होती हैं, वीकेंड क्लासेस होंगी, वहाँ पर आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। और जहाँ तक एग्ज़ाम का सवाल है, जहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर्स बनते हैं, जैसा मैडम ने बताया था शुरुआत में ही कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स जहाँ बनेंगे वहाँ पर आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ प्रोसेस जो होगा वो बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम, ऑनलाइन अगर मैंने ऑप्ट किया, उसका ऑप्शन क्या है? ऑनलाइन कैसे स्टडी करना होगा फिर? ऑनलाइन में ये कि जैसे मैडम ने अगर बताया था लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि आपकी जो क्लास होगी वो आपके कंप्यूटर में ही होगी। कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं उसी के अंदर आपको पूरा एक वो पोर्टल, एक लिंक मिल जाएगा। उसी पर ही आपका सारा असाइनमेंट आपको वहीं करना होगा, आपको क्लासेस वहीं लेनी होंगी, आपको किताबें भी वहीं मिलेंगी, आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी से ही आपको सारी पढ़ाई करनी होगी।
तो ये आपके ऊपर है कि आप किस में कन्वीनियंट है। मुझे लगता है कि शायद एमए लिटरेचर उसमें अवेलेबल भी नहीं है अभी ऑनलाइन में, है ना। अभी यहाँ जो आप प्रोग्राम पूछ रहे हैं ये अभी उसमें अवेलेबल नहीं है, तो आपको ओडीएल प्रोग्राम में ही लेना पड़ेगा, जिसमें कि आपको फेस टू फेस क्लासेस कुछ होती हैं, पार्ट जो वीकेंड क्लासेस होती हैं, और आपका किताबों से आप पढ़ाई करेंगे उसमें। ये एक प्रोसेस है उसका। जी ओके, थैंक यू। डॉक्टर विनीता, जो अभी चैतन्य का सवाल था उससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं बिल्कुल कम समय लेकर देना चाहूँगी। जैसा चैतन्य ने पूछा कि उनको पढ़ाई किस माध्यम से करनी पड़ेगी, तो चाहे हमारे ओडीएल प्रोग्राम्स हो या ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो, जैसा अभी हमने बताया कि एक में स्टडी सेंटर से आप एसोसिएटेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और एक में आप एलएमएस से अटैच्ड होते हैं। पर इन एडिशन टू दी एलएमएस एंड दी स्टडी सेंटर विथ विच द स्टूडेंट इज एसोसिएटेड, हमारी ऑनलाइन रिपोजिटरी है जहाँ पे बहुत वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है, और सारे रिसोर्सेज, एडिशनल रिसोर्सेज और रेफरेंस वाले रिसोर्सेज ये मौजूद हैं। और जैसा अभी हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं, ये ज्ञान दर्शन चैनल है, तो ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से भी कई प्रोग्राम्स प्रसारित किए जाते हैं, टेलीकास्ट होते हैं, जो रिकॉर्डेड होते हैं, कई बार लाइव भी होते हैं। और इसी तरीके से हमारा ज्ञानवाणी है, ज्ञानवाणी भी जी बिल्कुल, जहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स चलते हैं। अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, और अगर आप इंटरैक्ट करना चाहें तो आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। और इंटरनेट बेस्ड रेडियो हमारा है, ज्ञान धारा है, आप वहाँ पर भी इंटरैक्शन कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू ऑल दीज हमारे स्वयं प्रभा चैनल्स हैं जो डायरेक्ट टू होम टेलीकास्ट चैनल्स होते हैं। इसमें चैनल 17, 18, 19 और 20 जो है उसमें इग्नू के हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं। जैसे चैनल 17 में अलग स्कूल्स के प्रोग्राम चलते हैं, 18, 19, 20 में अलग अलग स्कूल्स के प्रोग्राम चलते हैं। तो अगर आप स्कूल वाइज सारे चैनल्स डिवाइडेड जी हैं, जी बिल्कुल, अलग-अलग स्कूल से। तो ये 4 चैनल्स हैं, स्वयं प्रभा चैनल्स, और इनके लिंक्स भी आपको इग्नू के मेन पेज पर जब आप जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्टूडेंट सेक्शन करके जो हमारा सेक्शन है वहाँ पर आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपने, जैसा मैंने बताया, एमसीए में एडमिशन लिया है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो आप एसओसीआईएस वाले लिंक पर जाएंगे और वहाँ पर अपने प्रोग्राम्स को देख पाएंगे, जो एडिशनल रिसोर्सेज है, वीडियो लेक्चर्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। एंड इन एडिशन टू दिस जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रोडक्शन सेंटर है डॉक्टर विनीता, जहाँ पे ये सारे ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, टेलीकास्ट, जी बिल्कुल, डिस्कशन कर रहे हैं, टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। तो ईएमपीसी का भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रोडक्शन सेंटर के अपने बहुत सारे ऑडियो रिसोर्सेज हैं और वीडियो रिसोर्सेज हैं जो स्टूडेंट सेक्शन में ही उपलब्ध हैं। तो जब आप इग्नू की मेन पेज पे जाएंगे, जैसा मैंने कहा बहुत इन्फॉर्मेटिव है, सेल्फ कंटेन्ड विद इन्फॉर्मेशन है, और स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप इन ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से, और उसको देख सकते हैं। तो ये एडिशनल रेफरेंसिंग हो जाएगी आपके लिए, इन एडिशन टू द स्टडी मटेरियल्स दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विथ, इन एडिशन टू द एकेडमिक काउंसलिंग दैट यू विल बी डूइंग, इन एडिशन टू ऑल दिस यू विल बी हैविंग दीज एडिशनल रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल, सो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट दैट। और डॉक्टर विनीता, एक जो इन्फॉर्मेशन जो मैं बिल्कुल बोलते बोलते रुक गई थी क्योंकि चैतन्य का सवाल आ गया था, वो कॉन्वोकेशन से रिलेटेड थी कि जो बच्चों ने पास आउट कर लिया है वो कॉन्वोकेशन के लिए फॉर्म ज़रूर भर दें दिसंबर 2021 और जून 2022 के लिए। और अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो वहीं पर ईमेल आईडीज़ भी प्रोवाइड किए गए हैं, फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ पर उन वो नंबर्स और ईमेल आईडी पे संपर्क करके अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। जी डॉक्टर विनीता। बस अब हमारे स्टूडियो इशारा कर रहा है, घड़ी भी इशारा कर रही है कि अब हमको कार्यक्रम के समापन की तरफ ले जाना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको कार्यक्रम से काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली होंगी। और साथ ही हम इस वादे के साथ कि हम अगले मंगलवार को इस टाइम पर पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। We wear clothes on a daily basis, but have we ever wondered where do our clothes come from? Who makes our clothing? And who are the people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing? If you want to know more about this,
Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer, or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10+2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? As a teacher, our role is to teach unknown subject to the students and make them familiar with the subject, understand the concept, and then trying to apply those concepts in the real life situation. This is a routine, a normal teaching learning processes. But here in this program, we are going to discuss about how to teach a media. As you know, media, information technology based internet or television, newspaper, everybody knows about that. Everyone is familiar with that. We are using those platform day in day out, 24/7, in different capacity, different level we are doing that. And how to teach those familiar subject with those same students, set of students. Students are using YouTube, students are using a newspaper, watching film, regularly watching a sports broadcast, everything they are familiar. But we need to teach them about the media. And there are unique ways in which we can teach this about media, understanding the media, and how to participate in the media. These are the nuances of media and information literacy. In this program, we are going to discuss about different pedagogical approaches of teaching media and information literacy. As you know, there are three main pillars of media literacy. One is accessing information. This is a primary pillar, characteristics or skills, we can say that. Second skill is understanding the content. The third one is participating in the communication, accessing the right information and understanding the content and participating in the communication process. So we have to teach the students. We need to inculcate skills and competencies on these three pillars. There are various ways, approaches, pedagogical methods in which we can develop skills and competencies of media literacy. Students might be familiar with the media, might be familiar with accessing the materials, but here the media literate person characteristics are different. The sense, when we are in a position, when we are in a scenario, we need information means we need to know from where we can collect those information. This is one aspect of the skill. Second, once you got the information, we need to know how to read between the line. The third is able to generate the content. Whatever you're thinking should be reproduced critically,
creatively, responsibly, because whatever posting we are doing in the social media reaches nook and corner of the globe. So this is about media literacy, and let's understand the different approaches of media literacy. Media literacy pedagogical process. There are many methods in which we can teach the media literacy. And here the screen you can see the list of pedagogical approaches, and many of them are related to accessing information. Some of them are related to understanding content, understanding the materials. Third set of approaches related to participating in the communication. For example, issue-based inquiry, empirical scientific inquiry, case study, collaborative learning, all related to understanding how to access information. Textual analysis, contextual analysis, translation are related to understanding the content. Simulations, production, critical inquiry, dialogical inquiry are related to participating in the communication process. Let us understand each of these approaches individually, then how as a teacher can use those approaches to teach about media, to teach through media. Teaching about media, teaching through media. These are two differences. You need to understand that. Teaching about media is about informing students or learners about how to use the media for accessing information and all the other pillars of media literacy. Teaching through media is using those media and available platform for teaching any other subjects, sociology or physical sciences or geoinformatics. Like that, any subject can be incorporated with the media content. How we can do that? So these approaches can be used for teaching media, or these approaches can be used to teach some other subjects, non-related subjects like pure science or pure humanities and other things. Let us understand these issues very clearly. The first approach of media literacy pedagogical method is issue-based, issue inquiry learning. Here, the teacher needs to train the students about inquiry making, learning through inquiry. Learning through inquiry that leads to collecting more information, that leads to better decision making. So issue-based, identify an issue and try to explore more information about the issue and try to conclude or draw references based on the information collected. One such example we can give, the students or learners or teacher or ourselves are very familiar with television or film content. And there is a concept called stereotypes. Stereotypes in the sense, different gender are portrayed in a different manner. Male may be in a different manner, female may be in a different manner, third gender may be in a different manner. Not all the gender are equally treated. Every one of us knows about that. So this is an issue. Though in population comprises more or less equal gender balances, there may be a deviation here and there, but equal balances. But that's not being reflected in the online content or television content or film content. Hero or heroine characters or varies their role, the importance varies in a different level, male and female and all. So this is an issue. A student or a teacher can assign this responsibility to the students to explore more about that. Students can go through the content, go through the film, go through the news content, even news or non-news, entertainment content to identify the portrayal of gender in different categories. They're exploring, they're inquiring about this issue with the various media platform, and then making a decision or making a conclusion about portrayal of gender, equality, races through media analysis. Or the students can be assigned to check with various online platform how privacy issues are being implemented, how different social media companies are stringently following
privacy issues, or how individuals are practicing privacy concern, or how much awareness among the social media users. Because there are a lot of issues, a lot of information is being revealed, location and car numbers and the way we are traveling, everything we are revealing on that. But how much information is being compromised, that can be explored. And there are a lot of harassment against individuals or groups in the social media platform. Students can be assigned to explore what kind of issues, bullying, cyberbullying, hate campaign and everything, towards individuals, how it's being done. It's ethnographic study. The students may not be know what is ethnographic, but maybe assign that you take a couple of issues and identify how individuals are targeted. They can go through the content, they can make the inferences, they can make a conclusions based on that. This is issue-based learning on that. They're understanding the how media operates. Here, remember that here the students are assigned to do a work. They are getting two different kinds of skills. One, they need to extract the information from different sources about the issue, and they learn more about the media issues. For example, gender portrayal, privacy issues, cyberbullying, all these matter. So multiple benefit from one approach. Next is problem-based learning. Here, the students are assigned to study more about a problem. And regularly, the classroom settings, we teach a lot about concepts, theoretical concepts. But the theoretical concepts needs to be contextualized or relates with the real life situation. So theory, concepts are available, that they are familiar with that. For example, gender equality, gender inequality. We can talk a lot about it theoretically. Let them understand how gender equality or inequality is being practiced in the newsroom or newspapers, newspaper content. So the concept is gender equality or gender inequality, and let them explore those issues through the proper newspaper analysis. That's a problem, and they can go through the various content. The one advantage with this problem-based learning is they are trying to interrelate with various subjects. And as a media teacher, media student, they're relating with the sociological aspect of populations, gender equality or cyberbullying or sustainable development goals are being promoted and everything that. So interdisciplinary knowledge is being explored, and that gives a better understanding about their environment, their society, and national level, sometimes global level. And one of the example here, problem-based learning is students may be assigned to develop an effective social media marketing campaign for a specific particular audience. For example, promoting sustainable development goal. There are 17 sustainable development goals agreed by various member countries of United Nations, and 2030 is a deadline to target to achieve those targets. And there are various, within the 17 goals, there are 169 indicators, and specific targets are specified. And for example, goal number 4 talking about digital literacy, education, but one of the specifically they're talking about promoting digital literacy among the youngsters. Goal number 5 talking about gender equality and promoting ICT among the women empowerment through ICT. And goal number 13, 14 talking about environmental awareness, where the media can play a role. But each goal, if you look at that, the target audience are different. Goal number 4 talking about quality education, and the audience for that group is teachers, parents, or students. If we want to promote more about that particular development goals, we need to identify specific marketing strategy. Here we are not talking about consumer marketing. This is a social media marketing about relevant social issue, promoting better education, creating more awareness about environment. That type of audience is different. So social media means maybe through a particular video model or audio based or infographics based or text based.
Students may be assigned to develop a marketing strategy to promote a sustainable development goal. Here there are multiple benefits in that approach. They come to know more about SDG. They come to know more about what is the target audience. Particular audience means they need to identify the target group. They'll identify the characteristics. Because ultimately, when we are communicating, we are not communicating to every nook and corner, or we are not communicating all the sections of the society. Our communication will be very effective if we target our information to specific audience segment. The students will understand multiple benefits here. They understand that subject, they understand who the right group, and how to customize this content for that group. So they'll try to use a social media marketing strategy for that. So this is the overall approach of problem-based learning. The next one we'll learn about empirical approach and scientific inquiry. The title looks a little complicated, technical, maybe, but very simple, because everywhere we are advocating that media literacy means asking critical questions, and critical cognitive skill is required to understand the complex issues. And empirical and scientific inquiry means approaching every aspect of life in a very systematic manner. Systematic manner, identifying an issue that we have seen a couple of slides back, issue-based approach. The scientific inquiry means you identify the issue, investigate, you access more information about that, and assess the scenario and ask more questions and collect those information from reliable sources and understand what is the existing knowledge about that issue and develop your own method to investigate that problem. With your own information, with the past information available with your understanding, try to create a new conclusion or new inferences. And for example, here, how artificial intelligence is being used to control or to identify hate speech. As you know, artificial intelligence is extensively being used by IT companies, ICT-based platforms. Is automating process. Instead of many human beings involved, computers are automating the process to streamline the many activities. So one such effort is artificial intelligence. You know about hate speech. Hate speech is a deliberate attempt by individual or group of individuals to target various segment of the institution or individuals to malign their activities, to bring disrepute to those people. But the computer or algorithm or the coding through the artificial intelligence, they can control some extent the hate speech. Compared to other media platform, the hate speech or misinformation or disinformation are rampantly accelerated in the social media platform. So if you understand the role of algorithm, then we can some extent we can control the hate speech. This how it's being explored, how it's being implemented, can be explored in a very scientific manner through a project given by the students for the media literacy purpose. Next one is a case study. Here the case study matter is about, because this is extensively used method in the university level or college level higher studies. They'll take a specific case and they go deeper into that, and they'll understand the different dimension of the issue. Might be they explore the solution to that, or they try to interrelate the various variables in order to predict the future. Marketing people or scientific inquiry or regular research work, extensively they'll take about the case study that. And one of the approach for media literacy is a case study. And here how a product can be successfully promoted through a marketing campaign, or how influencers, social media influencers can be used to promote a specific product. How this system is working, how particularly marketing strategies being working for promoting social issues or consumer goods. And there are various strategies being used for the companies
or various stakeholders to promote either consumer goods or social issues through various media platform. This is students can critically analyze how various strategies are being used by the media companies to promote certain product or services. It's a classic example to collect various advertisements or campaigns to study about that. Once students takes a bird's eye view, because if you look at the issues individually, you may not be able to, or students may not be able to understand the totality. But if you take couple of issues, take the case of this kind of strategy, marketing strategy, they can apply this strategy in various contexts. Once they get a couple of good examples, they can make a kind of generic understanding. So this helps the students to go deeper into the specific area, and they can adopt their own approaches to understand the situation, and they can make inferences based on their efforts. Another one is a collaborative learning. This is a last approach of first skill of media literacy. Means how to access right information. So issue-based, problem-based, scientific inquiry, case study, or collaborative learning, or related to identifying a situation, identifying a scenario, collect the appropriate information, and make appropriate decisions. So if you look at that, this is all related to one specific media literacy skill, that's accessing information. Accessing information just looks like a very simple strategy, but what kind of information we want? So we need to identify the problem or issue or case, or identifying a product strategy and everything, and for that purpose we need to collect the information. Information comes from various quarter. So like that, this is the last exercise of last media literacy media pedagogical approach is collaborative learning. Collaborative learning that's because of recent development in information communication technology. Students and teachers can collaborate each other, particularly among the students. Among the students means maybe 5 to 8 or 10 people can be assigned to one specific topic. They can create a group, and they'll divide the role, and they'll investigate the issue, and they'll come back with that. So instead of one person rigorously doing a case study on marketing strategy, if 5 people are assigned, each person can bring two examples. That team can bring around 10 to 20 examples on specific marketing strategy of sustainable development goals. So the small team can generate more information. So more information means as a member of the team, they are able to understand 20 different examples of given topic. As an individual, it takes a very long time for the students to understand more about 10-20 examples. This is a benefit of collaborative learning. And another one example is, a topic can be given to the team of people, 5 to 8 people, and you know the Wikipedia platform is a online platform where everyone can be a contributor, a editor, a publisher. So all individual can take all the roles. We don't need to depend on newspaper or television, or somebody producing, somebody editing, somebody broadcasting and all. Wiki platform allows individuals to take multiple roles. So the 5-member or 8-member students, they can collaborate each other through wiki platform. They can generate an essay, a topic on specific theme. For example, understanding goal number 5, gender equality. Students can write an essay about that, but they can distribute the responsibility among the 5, use the Wikipedia or wiki platform. They can generate the essay. Various person can contribute the content on different timings, not necessarily that they have to sit together and they have work on same time. Different locations, different timing, but exercise continued 24/7. This is the benefit of collaborative learning, can be extensively used. Wiki is one. There are various cloud computing nowadays. Many companies are offering cloud computing where the one document can be created in one, example Google Drive, where you can Google Doc,
and the doc can be shared among the team, and team members can create. There are many examples. Documents are, books are created with the help of collaborative learning. So this is one example of media literacy pedagogy. Now we move on to the next set of approaches, pedagogical approaches for media literacy skill. Next couple of approaches related to understanding the content. This is the second skill and competency of media literacy. Textual analysis is the one that talking about understanding the materials. Remember that whether it's a visual or printed or verbal, whatever communication is, a group settings or mass media or through simulated realistic or real content, every communication is coded. Coded in the sense, when I am speaking to some group of people, I have certain agenda. Like that, one politician talking to the audience or mass, that person must be having different agenda. When marketing person visiting a family, they may have different agenda. So every communication settings, they have specific agenda. And that agenda is being delivered with various approaches. And that includes technical, symbolic, and narrative structure. Every information, every communication have technical codes and conventions, symbols, and signs. All are being used to communicate our agenda, our intention, our motive to the one or large section of the people. This is how the newspapers or various media creates opinion. Public opinion is a very crucial asset for various stakeholders. So this can be studied clearly if the students are assigned to study media content in a systematic manner. Understand, take a YouTube video, 2 minutes or 3 minutes video, understand how codes or conventions, signs and symbols are used to convey certain meanings. This is able to understand that this exercise will help them to read between the line, and how the producer or director conveys certain information through dialogue, through colors, through symbols, through music, through silence. There are various ways in which the information is being conveyed. So this is one is a textual analysis. Another approach is contextual analysis. One, we understand the media content, how to understand the media content. Remember that the timing of the media content, the timing of releasing a film, advertisements, news story, interview, press conference, everything connected with either timing or context. It may not be revealed to everyone, but as a media consumer, we need to know why this particular story is being highlighted continuously for a couple of days without any reasons. What is the context for that? And students, they can classify the films, television, video games on particular country specific. Maybe it's popular in a particular country, maybe may not be popular in other country. And how media ownership and how their relationship with the democratic and free speech exercise. This can be easily explored based on the contextual analysis. And you know that the political map or in the social setup, the governance setup varies from country to country. Easily we can study and the media content based on the ownership pattern and how much they are related with the free speech. So these two are related with the second skill of media literacy, that's understanding the content. And a third approach for the understanding the content is translations. This is a very simplest way of understanding the content or read between the line is we can assign the students, take the English content, translate it into mother tongue, whichever the mother tongue, Hindi, Tamil or Telugu or Assamese, Bengali. One page, one paragraph also easily they can translate. They'll come to know about many things about that. And the last couple of approaches is simulation and production. Here, students are assigned to make a film or documentary on very common theme for a couple of minutes. And they may not know all the nuances of filmmaking, but with the availability of smartphone,
with a responsibility given to various students. Somebody can shoot, somebody can write a script, somebody can give a voiceover, somebody can give content and to make a film. So all these approaches, whatever we have seen, that are inculcated, structured to create a skills and competencies of media literacy, of accessing, understanding, producing content. Hope these approaches can be practiced by various stakeholders to increase the media literacy skills and competency in the various learning situations. Thank you. Hello and welcome to this session. This session is on database warehouse applications and popular data warehouse platforms. So this topic pertains to MCS 221, data warehousing and data mining, Unit 1, Block 1, fundamentals of data warehousing. So in the earlier session, we have seen the various types of data warehouse architectures and types of data warehouses. So in this session, this is the third session in the series, and in this session, let us talk about the data warehouse applications and the platforms. So in this session, we will talk about the OLAP, OLTP, what are the basic differences between OLAP, OLTP, and a little bit focus on the data granularity, what is data granularity, and how we have to take care of the aspect of data granularity, metadata, data dictionary, applications of data warehouse, and popular data warehouse platforms. So this is the basic agenda that we had set for today's session. So coming to the OLTP and OLAP, both the terms looks similar, but with a vast difference. So OLTP, the full form is online transaction processing, and OLAP is online analytical processing. So these two terms similarly look like the same. However, there is a vast difference which we are going to discuss now. So the OLTP is completely operational related and OLAP is informational. So the data warehouses, the concept that we are learning belongs to OLAP, which is completely informational and not operational. So all online transaction processing, this actually captures, stores, and processes data from transactions in real time. So it doesn't have the interaction with the historical databases where when we talk about the data warehouses. However, this is completely online, real-time kind of transaction processing system, and each transaction involves individual database records made up of multiple fields or columns. As we mentioned, the data warehouses can't change the data because all the data is stored as a repository centrally. If we talk about the centralized data warehouse, that particular data is historical data, and there is an opportunity to take the data from that particular data warehouse when the decisions are to be made. However, we can't write or else we can't change the data that is existing in the data store of data warehouse. So examples of OLTP are like banking transactions wherein which it happens real time, credit card activity,
or retail checkout scanning. So all these things comes under the OLTP kind of platforms. And the major emphasis is on the fast processing. Here, processing is the main focused area. And OLTP databases are read, written, and updated frequently, whereas the reverse is the data warehouse, we call it as the OLAP. If a transaction fails, once again, a need to be taken care wherein which the system should ensure the logic in order to protect the data integrity. So in the OLTP, the transactions, whatever that is happening in the real time, if something goes wrong, or else if the transaction fails from one side, automatically the complete care needs to be taken care by having a kind of data integrity aspect. Then coming to the online analytical processing, this applies completely to the data warehouses, wherein which complex queries to large amounts of historical data aggregated from the OLTP databases. So the sources of the databases may be from many areas, we call them as the subjects. So from the many subjects, the data will be pulled into a real-time like a data store, from wherein which we'll be doing some sort of analytics, mining, and it is like used in the business intelligence projects. So here, the emphasis is on response time, because most of the queries, whatever that are placed against a data warehouse, are very much complex in nature. It may be involved many tables, so that the queries, subquery, and then there may be another 2 levels of subqueries, wherein which it takes much time. And always we look for the response time, the little time of response that it has to give the outcome. So here the major emphasis is on the response time. Each query involves one or more columns of data aggregated from many rows, and here we can quote some sort of examples like a year-over-year financial, means the complete financial performance of that particular organization. This may be one example, or else the marketing details. This may be for one year, half year, whatever the case may be, or else the trends. So all these things, whenever we try to like put as the query against the data warehouse, so this comes, the queries will be very much complex, and the response time will be running into some sort of minutes also, seconds and minutes. So OLAP databases and data warehouses give analysis and decision makers the ability to use custom reporting tools to turn data into information. As we talked, we had seen in the first slide itself, all these OLAP are informational data systems. So coming to the difference, we drill down to a little bit wherein which what exactly are the differences between the OLTP and the OLAP. So in the OLTP, when we take the aspect of characteristics, the parameter of characteristics, it can handle a large number of small transactions, and these transactions happens real time. And in case of OLAP, it handles large volumes of data that is stored in the data repository of the data warehouse with complex queries, with handling the complex queries. Suppose if you talk about the query types, in OLTP, the simple standardized queries that we do in Oracle, MySQL, and other kinds of databases, those are possible in the OLTP, but the complex queries handling is possible in the OLAP. When we come to the aspect of operations, these are all based on insert, update, delete, those simple commands that we use regularly on any database management systems. But in case of OLAP, these are all based on select command. That too, the aggregation of data needs to be done, and then from that particular aggregated data, complex queries are run, and the query response time may be running to seconds to minutes. And when we talk about the response time, OLTP is instantaneous, or else we can call the immediate response will be happening within milliseconds or nanoseconds. However, when we take case of the OLAP, it may take seconds, minutes, or even some complex queries may take hours together. So pertaining to the design aspect, the industry specific such as retail, manufacturing, banking, insurance, all these things are the kind of design design systems. Those can be done using the OLTP. But here, the 4 aspects, in case of OLAP, the 4 aspects, or else you can call them as the characteristic features.
subject oriented, time variant, non-volatile, and then integrated. So these 4 aspects needs to be taken care while designing the OLAP data stores. So coming to the source, all the transactions will be happening, and then in the OLAP, aggregated data from transactions will be happening. That too on the historical database. The purpose is to control and run essential business operations in real time in case of OLTP, and in case of OLAP, it has to plan, solve problems, support decisions, discover the hidden insights. So wherein which we will be using several data mining tools in order to find out the insights that those are there in within the data existing. So data updates, short, fast updates initiated by the user in case of OLTP, and in OLAP, data will be periodically refreshed with scheduling. Like it may be scheduled for 24 hours, it may be scheduled for 10 days, whatever the frequency that we had selected in order to refresh the cycle, the refresh cycle that we had selected for the data warehouse, that will be taken as the major aspect, and those particular data will be refreshed in the frequent intervals that we had stated. Then comes the space requirements. These are very small if historical data is archived, and these are very huge. OLAP systems are very huge to aggregate large data sets. Nowadays, they are not going for the normal kind of SAN or other kinds of things. However, most of the data warehouse systems by the companies, they are selecting the cloud-based ones. So once again, we see what are the advantages in the forthcoming slides. So backup and recovery, regular backups required to ensure business continuity and meet legal and governance requirements in case of any downtime. So immediately, or else in case of any transaction failure or failures, so immediately that needs to be updated immediately. So for that reason, they will continuously keep up a kind of image, or else you can call as the image backup, so that immediately once the system is down, immediately it can be carried out from the images that are being stored. But in case of OLTP, lost data can be reloaded from the OLTP resources, and then that can be pulled up, and once again the queries can be placed. Coming to the productivity, this increases productivity of the end users, while as this particular OLAP increases the productivity of the business managers, data analysts, and the executives. So all these things are coming to kind of level where in which the decision support needs to be taken care in any organization. So that particular data warehouse is pitched at the decision support system level. So coming to the data view, list day by day business transactions, and then multi-dimensional view of enterprises of data is there in the OLTP. Likewise, when you come to the database design, these are all normalized tables for efficiency, but when we talk about the OLAP, it will be using the denormalized databases for the analysis. So talking this much about the OLTP and OLAP, let us focus on the important aspects which pertains to the data warehouses, that is the data granularity. So granule means a little piece. So granules means little pieces. So what exactly is data granularity? How to drill down those particular data into pieces? So granularity is one of the main elements in the modeling of the data warehouse data. And then this granularity of data refers to the detail levels. They may be like elementary level, or else they may be of the higher level. So these particular details needs to be specified. Suppose if you take an example of, suppose if you want a kind of marketing trend, that to the winter wear during like November and then December. That too, if at all you take the case of November, December, once again, if you want the case of aspect of only December, that too towards the second half of the December, once again you can drill down, and how many sweaters were being sold. Likewise, if you place a complex query, you can even always drill down to the specific things wherein which the data granularity will be can be increased. At least 2 granular levels exist for many of the data warehouses by default, and then when we say that it is less granule or else less granularity or fine granularity, it implies that greater details of data, and then there will be less part of summary. So these particular two aspects comprises the less granularity. When we talk that it is greater granularity or else a kind of gross granularity or higher granularity, then it implies that
it is having fewer details of data and high end of the summary. So both these things needs to be covered under the greater granularity. So there is another aspect which is very much important for a data warehouse, that is the metadata. So metadata by definition it is nothing but data about the data. So metadata is the data that describes the other data, providing a structured reference that helps to sort and identify attributes of the information it describes. So this is the metadata. So what exactly is the purpose of using this metadata, or what exactly we want to know the data about the data? So mostly the data dictionary, whatever we talk in the DBMS, that is nothing but it is a complete full of the columns listing, and then the type of description of that particular column given in the data dictionary. Likewise, in the metadata, it provides context with details such as the source, the type, owner, relationships to the other data sets. All these things can be looked into whenever we find the metadata in the data warehouses. So in the data warehouse environment, metadata is the major component. So earlier we had seen several types of architectures in the earlier session. There we had specified the term within the block diagram, that is the metadata term. So within the data warehouse, that is the complete centralized pool, we had mentioned the complete data that is been coming from various resources, as well as we are calling a simple rectangular box we had kept inside, that is the metadata component. So in the database warehouse environment, metadata is the major component, and it helps to control reporting accuracy, validates the transformation of data, and ensures calculation accuracy. So this metadata also complies with the company end users definition of business terms. So this is the basic use of metadata. But in a data warehouse, data is stored using a common schema called as a common dictionary, which we call it as a data dictionary in terms of database management system. And within this data dictionary, data is kept about the logical data structures, file, address, and then index information and other kinds of aspects. So this is a major component, and it contributes, this metadata contributes the success of the data warehouse as a whole. So once the metadata is in a good place, then the success rate will be very much more. The data structure based on the metadata contain the following data warehouse information, like the data structure, and then data structures based on decision support systems analyst view, the data warehouses, data resources, the data transformation at the moment of its migration to data warehouse, model of the data, data extraction history. All these things are the things that are come in the form of DW information with respect to the metadata. So coming to the data warehouse applications, there are huge lot of applications at present, mostly in the sector of e-commerce, insurance, banking, and then investment, finance, marketing. There are huge number of applications. Those can be visualized using these particular data warehouses. What not, each and every sector, whatever you touch upon, there will be a kind of data warehouse application within itself having its importance. So in the investment and insurance sector, data warehouse is used to analyze the customer, market trends, and other patterns of data. So if you take the case of investment and the insurance applications, mainly you have to know about the customer, the potential of the customer you have to know, the market trends, in which kind of cases the customer is investing in what kind of businesses, and what are these interested areas, like most of the customers, what makes them interested in investing so and so company. So all these things needs to be will be taken care by the data warehouse application, if at all it is in the place in the investment and the insurance sector. And then the main thing that will be happening is the patterns, the insights. So those particular things will be known by the company, and they can float such kind of applications or such kind of schemes wherein which it can attract the customer in order to make investments in the investment companies. So the two subsectors where the data warehouse plays an important role are the foreign exchange, that is the forex, and then the stock markets.
So if we do such kind, if the data warehouse is in place in that particular foreign exchange companies or else in the stock markets, it can predict the patterns, trends, and other kinds of things, and then it can easily gives the information to the company. So the next sector that we can talk about is the healthcare sector. So if a data warehouse system is in this particular sector, the data warehouse system is used to forecast outcomes of a treatment, generate its reports, and share the data with different units like research labs, medical units, and insurance providers. So this particular, mostly the healthcare, they are using this particular data warehouse, that too with the intervention of some sort of AI tools also. If at all the data warehouse, whenever it is generating the reports and insights, if at all there is a kind of mix of the AI aspect also in consideration, then it will be creating marvelous reports which will be helping the insurance companies or else the health sector companies in order to take the patterns and other kinds of things. Enterprise data warehouses serve as the backbone of the healthcare systems, as they are updated with recent information which is crucial for saving the lives also. Depending upon the kind of test reports, depending upon the kind of tests for various diseases, if at all there is a kind of pattern that was been predicted, so obviously it will make a help to the health sector or else to the hospitals. Another sector which can be viewed is the retail sector. So be it the distribution, marketing, examining, pricing the policies, keeping track of promotional details, finding the pattern in the customer buying trends, whatever the case may be. So for all these kinds of cases, the DW is the solution. Data warehousing application is the solution for all these kinds of things. Many retail chains incorporate enterprise data warehouse for business intelligence and the forecasting. Nowadays, there is a big trend of e-commerce. So there also, this particular data warehouses, it will find out the patterns. So during the pandemic also, most of us, we were using the e-commerce solutions or else e-commerce platforms in order to buy many retail things. So there they had introduced a lot many like prediction finding kind of thing, or forecasting kind of the things, where in which it obviously predicting the buyer's pattern. So maybe electronic gadgets, TVs, whatever the case may be. So they are trying to like find out the patterns, and they are like completely filling the data, like filling the warehouses with such kind of products, wherein which it has a high demand in the market. So these particular things were very much used during the pandemic, and currently also all the e-commerce solution companies, they are having such kind of data warehouses running background in order to find the insights of the things. The other interesting application is the social media website application. So these particular social networking, as you can see, Facebook is one thing, Twitter, LinkedIn, likewise WhatsApp, whatever the case may be, all these social media websites, they are having their own data warehouses running background. So these are all wherever when we touch upon this area called as social media, the main factor that touches is the huge volume of data. So it generates huge volume of data, and these sites collect the data on members, groups, locations, etc., and store this information in a single central repository. And then the data warehouse is necessary to implement the same data because of its high volume of the data. The other sector wherein which the DW applications can be visualized is the banking sector. So most of the banks are now using these warehouses to see the account or else card holders spending pattern. So for which kind of things the customer is completely showing the inclination. So such kind of patterns, they are completely, in order to find that such kind of patterns or insights, they are having a huge data warehouses installed at their end in order to predict the interesting patterns. They use this particular spending patterns to make special offers, deals, and other kinds of promotional activities to take place in their banking sector. So government, so not only the private companies, not only the retail, insurance, investment, other kinds of things, government is also having some sort of data warehouses in place. In addition to the store and analyze taxes used to detect tax theft, government uses the government data warehouse, wherein which mostly nowadays they are using it in the taxes sector. However, it will be introduced in many
aspects or many sectors wherein which the data warehouses will be created subject-wise, and then that interesting trends can be predicted. And the other interesting sector is the airline sector. It is used in the airline system for operational purposes such as the crew assignments, the road profitability analysis, flight frequency program promotions, etc. So these are some of the visualizer applications wherein which once the data warehouse is in place in the airline with the airlines, then these kinds of applications can be taken care. Other thing is the public sector. So information is collected in the public sector's data warehouse. It helps the government in order to put some sort of schemes and other kinds of things, or else promotional activities, or else they can focus on the below poverty level kind of people, what schemes they would require or what kind of things that they must require. So all these things, once the data is in place, the data warehouse is in place, so most of the trends, patterns and other kinds of things can be predicted, and they can promote some schemes they can design even some schemes with respect to the patterns those are being developed. So coming to these data warehouses, once we talk the data warehouse, it may be a complete solution available from one of the companies that we are going to discuss, or else it may be a internal kind of development. Just like we develop the software for the several applications, it may be a internal indigenous kind of thing wherein which we ourselves can build up a data warehouse. So coming to the data warehouse platforms, this particular data warehouse platform is a critical database for supporting data analysis and acts as a conduit between analytical tools and the operational data stores. So this is the intermediate part between the data. One side we have used data, other side is we are having a kind of analysis patterns and other kinds of things. So this particular data warehouse is the pooling system which like propel which will be propelled the data from the data warehouse. The most popular data warehouse solutions include a range of useful features for data management as well as the consolidation. So whatever we talk, data warehouse is nothing but it is coming from the sources of data. It may be one source may be having a structured data, other source may be having the semi-structured data, and the third source may be having a unstructured data. So everything will be coming into the repository, and from that we are taking the kind of things, the applications that we intend to do. So among these platforms, many private parties are involved, like private MNCs are involved, and one big company is the Google. So Google is having a solution called Google BigQuery. So this BigQuery is a cost-effective data warehousing tool with built-in machine learning capabilities. So here, when we talk about the machine learning, it is having a component called as the AI component, artificial intelligence component also. So this BigQuery is the product of Google, and then you can integrate it with the Cloud ML, that is Cloud Machine Learning, and TensorFlow to create powerful AI models. So once those particular models are being trained, they will be giving you interesting patterns which the human can't even predict. So that kind of thing is possible with the Google BigQuery. It can also execute queries on petabytes. You can see the volume. We are talking about not only the bytes and gigabytes, here we are talking about the petabytes of data that is stored in the data warehouse. And these are always, whenever we talk about the data warehouse, these are all scalable systems, and most important aspect is these are serverless and mostly launched on the cloud. So most of the data warehouses will be launched on the cloud, and then these are completely serverless. And this serverless cloud data warehouse is ideal for companies which is having a very good magnitude of database operations. And the other company which is having a very good product is the Amazon. So Amazon Web Services is having a product called as Redshift, and this Redshift is a completely cloud-based data warehousing tool for enterprises, and this supports high-speed data analytics. So most of the people, because when we talk about the AWS, it is obviously a cloud-based platform. So this is having a kind of high-speed data analytics, and it also supports automatic concurrency scaling. And the third product that we are going to discuss is the Snowflake. So in the dimensional modeling, Snowflake is one of the type of the dimensional modeling. There is a company with the name called as Snowflake, and this is offering a kind of DW solution with a wide variety of options for the public cloud technology.
And this particular, however, the Snowflake is suffering with some sort of a problem, that is, it is completely dependent on AWS and then the Google Cloud Services, because Snowflake doesn't have the individual vertical of cloud service, and it is the cloud services are completely based either on Amazon or else on the Google. Then coming to the Microsoft, they are having a kind of like a system, data warehouse system called as Microsoft Azure Synapse. So this is a robust platform for data management, analytics, integration, and more, and with solutions spanning of AI and then blockchain. So this is another big company which is having a kind of Microsoft, a kind of data warehouse solution. So before ending this particular session, we had concentrated on the OLAP technology, and then OLTP, data granularity, metadata, applications of data warehouse in various sectors, and also we had watched 4 to 5 data warehouse platforms which are being promoted by many of the MNCs. With this, I hope you understood the session today, and this particular session ends the Unit 1 of MCS 221 Data Warehousing and Data Mining. Wish you all the best.